today's we will start our new chapter of the history part, and the title of the chapter is Struggles Against the British Rule. So in this chapter we will study about which were the early revolts against the British rule, what were the causes of the struggle of independence of 1857 and why it was failed. So, and let's start the chapter. An opposition began to develop as the British East India Company established its rule in India. It was in fact a result of accumulated grievances of various classes, dethroned rulers, jamidars, religious leaders, sannyasis, sepoys, peasants and tribals, which made them stand up against the company's administrations and of their dislikes for the foreign regime. The year 1857 was an eventful year in the history of India, when the first major struggle known as Sepoy Mutiny broke out against the British rule. For over a century, during the regimes of company's rule and prior to 1857, many struggles took place in different parts of India. The major struggle of Giri community sannyasis in Bengal, Ahom revolt, Khasi revolt in Assam and Sylhet, struggle of Vijayanagaram king in Madras, Rangpur struggle of peasants, Karengi struggle and Wahhabi struggle were the prominent. The discontent against British rule also broke out in tribals, the struggle of Chuar, Ho struggle, Kol and Santhal struggles. There were uprisings by the sepoys also. The most notable of these were Vellore uprising in 1806, Barakpur uprising in 1824, Kanan uprising of Assam in 1825, Sholapur uprising in 1838 and Govindgarh regiment uprising in 1849 to 50. With the establishment of the company's power in Bengal, the company people started harassing Indians, and it affected all jamidars, peasants, artisans and sepoys. The company government exploited them, and ultimately the rulers and influential talukadars revolted against the companies who safeguarded their interest. The peasants' movement had a widespread effect in the history of India. The peasants suffered the most because of the economic policies and new land revenue system levied by the British government. They were exploited by the company and jamidars. The hunger, poverty and exploitation led farmers to take up these movements. The major revolt centers were West Bengal, Madras, Maharashtra, Gujarat, etc. The chief aim of these movements was to get rid of exploitation and get concession in revenue. So students, अंग्रेज जो थे वो लगभग 100 वर्ष उनको हो चुके थे हमारे यहाँ शासन करते हुए, और उनकी जो उन्होंने पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक नीतियां अपनाई हुई थी, उनसे हमारे जो समाज के लोग थे वो असंतुष्ट होने लगे। अनेक वर्ग थे, शासक थे जो जिनको डिथ्रोन कर दिया था, वो थे जमींदार थे, धार्मिक नेता थे, फकीर, सन्यासी, किसान, सैनिक सब थे, वो सारे उनसे असंतुष्ट हो गए थे और फिर
इस बीच उन्होंने बहुत विद्रोह उनके साथ विरोध करना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ा जो उनका विरोध हुआ था वो 1857 में हुआ था, जिसे हम फर्स्ट मेजर स्ट्रगल के नाम से जानते हैं, और वो 1857 में हुआ, उसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग उसका 100 इयर्स हो चुके थे, और 1857 के पहले भी कई विद्रोह हो चुके थे, जिसमें कि बंगाल के गिरी संप्रदाय के सन्यासियों का विद्रोह बहुत फेमस था। फिर अहोम विद्रोह हुआ, असम और सिलहट में खासी विद्रोह हुआ, विजयनगरम के राजा का विद्रोह हुआ, किसान विद्रोह हुआ, करेजी विद्रोह हुआ, बहावी विद्रोह। इस तरह से बहुत सारे आदिवासियों ने भी, कोल, संथाल, चुआर, ये सारे लोगों ने भी बहुत विद्रोह किए। जो सैनिक विद्रोह, मतलब जो अंग्रेज कंपनी में भारतीय सैनिक होते थे, उन्होंने भी कई बार विद्रोह किया। जैसे बेल्लोर में 1806 में हुआ, फिर 1824 में बैरकपुर विद्रोह हुआ, 1825 में असम के तोपखाने में विद्रोह किया गया, फिर 1838 में शोलापुर विद्रोह हुआ, 1849 to 50 में गोविंदगढ़ रेजिमेंट में विद्रोह हुआ। तो जो बंगाल में जो कंपनी की जो व्यवस्था थी, उसने क्या किया था, जनता का बहुत शोषण कर रहे थे वो, चाहे वो किसान हो, चाहे जमींदार हो, चाहे सैनिक हो, सब लोग असंतुष्ट हो चुके थे उनसे, और अब इसलिए उन सभी ने क्या किया, विद्रोह का सहारा लिया। इन सबसे बड़ा जो व्यापक विद्रोह हुआ वो किसानों का विद्रोह हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ। वह बहुत ही हिस्ट्री में उसका बहुत ही महत्व है और बहुत ही वो यादगार भी है। सरकार की जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज थी और जो नई जो उनकी भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू वाली जो सिस्टम था, वो किसानों को सबसे ज्यादा उसके कारण हानि उठानी पड़ रही थी। उसके कारण उनको भूख, गरीबी, शोषण, ये सारी परेशानियां उनके सामने आई, और इसके कारण उन्होंने कई बार विद्रोह किए। इसमें बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्थान थे जहां पर इस तरह के विद्रोह हुए। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कंपनी की जो एक्सप्लॉयटेशन की जो नीति है उसको दूर करना और अपने आप को उनके आर्थिक शोषण से छुटकारा दिलाना। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्रोह हुए जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।